So if you look at the market today, market is no different from last year. अगर आप देखेंगे फिजिकल 25 में मतलब अप्रैल 24 से मार्च 25 में market was flat roughly and profits were also flat. So markets today are following the profits. Profit growth आएगी तो market उतनी बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ेगी. Now the question is what is the profit growth therefore this year that we are expecting and what is the profit growth next year that we are expecting. I think that should decide the market returns because valuations are not in a bubble but they are high. They are high. So at these valuations, it cannot go up further. The valuation cannot go up further. It is a question now of how soon and how fast the profit growth can come back. Now, there are 2-3 things which we are seeing this year that after 3-4 quarters, June quarter was the first quarter where we saw that the profit की जो estimates थी, they were not getting reduced. So whatever companies were forecasting, more or less the companies met those expectations. Therefore, the profits were not cut. Profit estimates were not cut. Now, that is one part. Second part is that second half, when I look at ki jab October festival season onwards, October, November, December, January, February, March, there are 3 big things which have happened. One is the income tax cut in the February budget. Then you've had lower interest rates, easy liquidity, RBI pushing everyone for growth. And you have the GST cut, which has just been announced. So my view is that in the second half, you will see strong recovery in consumption. The initial feel which we are getting from auto companies, consumer companies, is that we are already seeing a lot of excitement around the festival season. And because of that, I think the credit growth will also pick up. So it is cable consumption, nahi, but beyond consumption, I think banking, credit growth, NBFCs, all these companies will show recovery in growth. So that gives me confidence that this year, overall, for the full year basis, ये जो fiscal year है, 25-26, you can get 8 to 10% growth in profits. And that is why my expectation is now that the market has been flat for first 6 months of the year. I think next 6 months, you will get 8-10% kind of return. And beyond that, if you look at it from a 2 to 3 year perspective, because this is a short-term view, but ultimately what we are seeing is that I will discuss trade war later, but I think from an economy perspective, finally, the government is very, very focused on driving consumption because consumption is 60% of GDP. And if GDP does not grow, if consumption does not grow, then GDP will not grow. Therefore, I think for the first time, there has been so much push. There are 3 things which have happened, as I said, income tax cut, interest rates, and now GST cut. And I'm getting a sense, and when we speak to the companies, we are getting a sense that at least in the second half, you will see a recovery in volumes, recovery in consumption. I think that is something. And the base is also low because last year consumption was extremely low. And therefore, this year, I think because the base was so low, because December quarter and March quarter were so bad, I think this year, second half, you will see decent recovery. As far as the trade war issue is concerned, I think I met a lot of companies who are directly impacted, like textiles and gems and jewelry. None of the companies are actually in a panic mode because they are saying that by November, December, anyway, they have the order book. And therefore, they are likely to they are likely to, they are of the view that obviously there will be trade war will settle down. And this is what is happening also. If you see Donald Trump's tweet yesterday or today morning, obviously he also wants to resolve the tariff issue. So all in all, I think अगर trade war का issue बहुत बड़ा issue नहीं बनता है यहाँ से, तो profit growth पे confidence I think has gone up in my view after the last quarter and after all the measures which have been taken to improve consumption. And therefore, I think 8-10%, I think short term may, and overall from a long term perspective, 3 to 5 years, a 12 to 15% kind of return expectation can be there from the markets as a whole. Now, this does not mean that each sector will do the same. Obviously, large caps today are looking cheaper, but mid cap mein jo overvaluation tha last year, this time mid cap was trading at a 70% premium valuation to large cap. That premium has come down to 35-40%.
small cap premium had gone to 40%. That premium has come down to 15-20%. So I think there is a healthy correction in the premium. And therefore, today I can say that there is no bubble. Like last year, September, December, May, mid and small cap, May, there was almost complete euphoria. I think that euphoria has come down, that bubble territory has come down. And therefore, today we are able to deploy capital in small cap with a 3 to 5 year view. We are able to find ideas which are more reasonably priced. And I think we are feeling much more confident about small and mid cap as compared to last year. So overall, in my view, in looking at all this, I think just coming to the funds, my view is that FlexiCap is the best category of fund. There is no doubt about it in my view. If you want to be more aggressive than FlexiCap, then multi-cap or business cycle. These are the two category of funds where you can be more aggressive. But FlexiCap category is the best category, and business cycle is like an aggressive FlexiCap. And there also we have made a lot of changes. I think although last 1 year has not been good, but I am feeling very, very confident that business cycle can also do well in the next 2 years. As far as the other categories are concerned, I think small cap and small cap is one category where earlier we were going slow, but now with the valuation correction, we are able to deploy more into small cap. As far as the recent NFO we did, Innovation Fund, I think the start was at the peak of the market. So obviously the NAV experience first 6 to 9 months has not been good. But we are extremely confident that some of the companies we have bought, and you can look at the topics that the companies are going to deliver in the next 3 years. So when we came with Innovation Fund, we are also said that the companies which we buy there will be a little bit more expensive because they are high growth with good management quality, and I think the market gives premium for that. And unfortunately, the market correction since then has impacted the NAV. But if I look at the portfolio, we have changed the portfolio a little bit. But if you look at the portfolio, I'm feeling more confident that nothing much has changed from a 2 to 3 year perspective. Now, that is as far as equity is concerned. If you look at the hybrid category today, I like multi-asset more than balanced advantage fund because multi-asset as a category, we can have gold and silver. We traditionally used to do commodity arbitrage only till 1 year back. फिर 1 साल पहले we started taking positions in gold and silver both. In gold today we have 7% and silver we have 5%. So totally about 11-12% we have between gold and silver. I think the way the market is changing, the global market is changing. I think there is generally a nervousness in global markets on dollar as an asset class, on US treasuries as an asset class, and वहाँ से पैसा वहाँ पे बहुत investment है. So US today is the most over-owned asset category, and foreigners own $20 trillion of US equities and about $15 trillion of debt, US debt. And there are a lot of sovereign wealth funds who own 40 to 60% of their total exposure in US. So that I think is changing. I think there is generally a nervousness, and people are moving away from dollars, and move away from dollar. They will either come to gold or they'll come to emerging markets. I think initially the money is going to gold, Europe, and Japan, not so much in emerging markets. Eventually that will also happen. So बहुत सारा मुझे questions आते हैं कि when will FIS start buying India? I think पहले तो they are buying maybe FIS or foreign investors or central bank. They are buying gold, they are buying Europe, Japan, because that is a closer substitute to US. Then I think a little bit of China they are buying because China is much cheaper than India. But India is a growth market, and India में अगर growth recover हुई second half में, so let me tell you that FIIs will come back because valuations अब reasonable होते जा रहे. Valuation today is about 21 times P. अगर मैं peak देखूं तो 23-24 तक generally multiples go and create a peak. So 21 times बहुत cheap तो नहीं है, but I would say fair है. So at 21 times, if growth comes back, I think FIIs will come back, and which is one of the things which I am quite optimistic of, and therefore one should invest during this period of lull. So ये जो 6 महीने का period है या 3 महीने का period है where market is waiting and watching, I think it should be used to do more SIP, STP in the categories which I mentioned.
which is the flexi cap, business cycle, multi-asset, those kind of categories, and obviously small cap. If one has to look at a sector fund, क्योंकि there are a lot of people who ask कि कौन से sector में, जैसे पहले 23-24 में you had manufacturing, defense, capital goods, real estate, power वगैरह, these sectors which did very well. Now the sector choice is very less. So I think there are only two sectors where I would be more optimistic, which is BFSI, banking and financial services, and consumer. Consumer, obviously, because you've seen what efforts the government is making, and also because even if the consumption does not revive, the theme itself has a lot of choice. So, for example, our own fund, Tata Consumer Fund, even though last 2 years the theme has not done well, but as a sector or as a fund, we have done well because there are other opportunities to buy within consumption, which is hotels, airlines, these companies have done, so like Zomato and Eternal, those kind of companies, they have delivered a lot of returns. So clearly, this is something which, this is one fund which is generally evergreen, but agar consumption revive hoti hai, to this consumer fund can do even better. So in terms of sector funds, the only two funds I'll recommend is consumer and banking. Otherwise, this type ke market mein, when the thematic moves are much lesser and the market has become more bottom up, I think the selection of funds should be mainly driven by flexi cap, small cap, and these diversified categories and not the thematic categories. So this is what I wanted to cover in the first 15 minutes or so. I think it's better that I give more opportunity to people to ask me any questions, any sort of questions which might be there in your mind. You can ask me about market or funds or any of the sectors which I just mentioned, or anything which is in your mind. I'll be more than happy to answer. क्वेश्चन एक है, ये है करंट सिनेरियो में जो हमारा जो एक नेक्स्ट ऑर्बिट जो इवेंट हुआ था उसमें भी मैंने सिल्वर के बारे में पूछा था। तो सिल्वर में आप अभी आने वाले 6 महीने में और 1 साल में क्या स्कोप देख रहे हैं, और आप बॉन्ड्स पे कैसा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रुपी का जो एप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन बोलो या जो भी बोलो बॉन्ड मार्केट में और करेंसी के हिसाब से आप बॉन्ड को किस समय देख रहे हो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट का ये जो है, मतलब इंडियन सिनेरियो में देखो या जो पॉलिटिकल इश्यूज जो देखो, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलो या स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के होने के बावजूद भी आप उसमें स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को कहाँ पे देख रहे हो, और फॉरेन का जो फंड जो आ सकता है या आ रहा है, जितना भी है, जो एक समय में काफी हाइप था और बाद में अडानी इशू और वो सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है रशिया के साथ है और अमेरिका जो अपना टैरिफ और कर रहा है, तो आप अगले 1 साल में आप पूरा मार्केट सिनारियो जो हर एक सेगमेंट में, जैसे डेब्ट बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड में जो भी हो रहा है, जितना इंसेप्शन जो पहले एक जो हाइप था कि एसआईपी एकदम आ रही थी, बाद में एकदम से बंद हो गई थी, अभी फिर से आ रही है, तो आप वो सबको कहाँ देख रहे हो, और बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड में एसआईपी, और आने वाले 1 साल में आप सिल्वर, और आप कमोडिटीज में किस और कोई कमोडिटीज जिसको आप फोकस कर रहे हो, और पंजाब में जो फ्लड्स आया है तो आप एग्री कमोडिटीज में कहाँ तक फोकस कर रहे हो सर। तो ये सब मेरे मिक्स क्वेश्चन हो गए। ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं कोशिश करूंगा याद करके आंसर करने के लिए। मैंने कुछ की तो व्यूज ऑलरेडी दे दी थी, बट आप शायद सुन नहीं पाए। सो सिल्वर में मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने 5% अभी भी सिल्वर रखा हुआ है। इनफैक्ट हमारे पास पहले 10% गोल्ड होता था, हमने प्रॉफिट बुक करके गोल्ड की जगह सिल्वर लिया था, एंड आई थिंक इट स्टिल डू वेल बिकॉज इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और अगर चाइना रिकवर करती है तो सिल्वर कैन डू बेटर देन गोल्ड इन द शॉर्ट टर्म, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बाकी मार्केट का व्यू मेरा ये है कि सेकंड हाफ विल बी बेटर, बट ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years प्लीज एक्सपेक्ट ओनली 12-13% रिटर्न, बिकॉज उतनी ही प्रॉफिट ग्रोथ आएगी। जिस साल 15% आएगी उसके अगले साल 10 हो जाएगा, तो 10 to 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख के आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उतनी रखनी चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी बढ़ चुके हैं। यहाँ से वैल्यूएशंस और नहीं बढ़ेंगे, अब जो भी रिटर्न आएगी वो प्रॉफिट ग्रोथ से ही आएगी। बॉन्ड्स पे मैं व्यू नहीं देना चाहूंगा, मैं केवल इक्विटीज देखता हूँ, तो बॉन्ड्स पे मेरा कोई खास व्यू नहीं है। आई थिंक दैट इट्स बेटर दैट आई लीव दैट व्यू, बट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स आई मेंशन दैट देयर 2 ही सेक्टर फंड मैं रिकमेंड करूंगा आज के दिन में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंज्यूमर। बाकी जो ट्रेड वॉर और जो एफआईआई वाला जो आपका क्वेश्चन था, उसमें समथिंग विच आई कवर्ड इन माय टॉक आल्सो, बट आई थिंक अगर ग्रोथ वापस आएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी है, तो एफआईआईज काफी फोर्स से अंदर आएंगे।
और हमारा इस समय हमारा जो एफर्ट है वो ये होना चाहिए एज अ एडवाइजर, एज एन इन्वेस्टर, कि हम इस दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखें, क्योंकि वैल्यूएशन का एक बेस बन गया है। अभी हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं है जैसा कि पिछले साल थे। इस समय जैसा मैंने बोला, मिड कैप स्मॉल कैप पिछले साल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, 70% प्रीमियम पे थे लार्ज कैप के, अब केवल 35% 40% प्रीमियम रह गया है। स्मॉल कैप में भी प्रीमियम कम हो गया और अब हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस माहौल में इससे ज्यादा चीप मार्केट मिलना मुश्किल है, अनलेस कि कोई बड़ा इवेंट हो जाए और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इससे 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 ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई भी करेक्शन होगी तो छोटी होगी यहाँ से, और इसीलिए मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में अगर ग्रोथ रिकवर होती है तो FII बाइंग विल कम बैक इन अ वेरी बिग वे, एंड देन द मार्केट्स कैन बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप ही नहीं कर पाए तो तब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगले जो 3 महीने 6 महीने हैं, हो सकता है मार्केट साइडवेज मूव हो, 5% मूव हो, उस दौरान में हमें उसको हमें यूज करना है और उसका उसका फायदा उठाना है, और उसका फायदा उठाना है कम रिस्क लेते हुए। इसलिए मैंने जैसे बोला फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट और ऐसे कुछ फंड्स जो कि बहुत हाई बीटा फंड्स। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि टैरिफ के ऊपर आपका क्या आउटलुक है? किसके ऊपर? टैरिफ टैरिफ हेलो। टैरिफ का मेरा व्यू ये है कि ये जो अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से ये पहले भी हो चुका है काफी कंट्रीज के साथ, और मेरा ये समझना है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी यूएस से, वो बातचीत बीच में रुक गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक उसका एक सोल्यूशन निकलेगा, और जो इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है और जो हमें रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ जोड़ा जा रहा है, वो सब एक टैक्टिक्स होती है नेगोशिएशन में, और कहीं ना कहीं वो सेटल होने की मुझे उम्मीद है। थैंक यू सर। और सर ग्लोबल इकोनॉमी आप कहाँ देखते हो? ग्लोबल मार्केट कहाँ ग्लोबल मार्केट में देखिए, अलग अलग मार्केट अलग अलग जगह हैं। मुझे लगता है चाइना मार्केट अभी बेस्ट है, क्योंकि चाइना में रिकवरी आ रही है और चाइना में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफी एडवांस्ड है, और वहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी इंडिया से तकरीबन 30-40% चीपर है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में चाइना कैन बी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, और ग्रोथ आएगी तो हम भी परफॉर्म करेंगे, बट चाइना इज लुकिंग बेटर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, वहाँ पे मार्केट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, कि वो कोई 5-10 स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और ओवरऑल मार्केट इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एंड नॉट वेरी सर्टेन। थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हेलो। या हेलो सर, लास्ट मेरा एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना इन्वेस्ट किया है सरकार ने, और जो पुल जो टूटते रहते हैं, और उसके हिसाब से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से वहाँ पे मतलब और भी बिल्डअप होगा, क्योंकि इतना सारा तो नुकसान हुआ है, तो अब उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि टैक्स के पैसे भी सारे पुल बनते हैं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो अभी उसमें फिर से री इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब वो भी कंपनी खड़ी होगी, तो उसका आप सिनारियो कहाँ देखते हैं, और ये री इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी? ओके, थैंक यू सर। देखिए, वो कंपनीज पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन और ये जो आप इवेंट बोल रहे हैं, ये बहुत मतलब इस स्केल पे बहुत ही छोटी इवेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोटल बजट है 11 लाख करोड़ का। अब उसमें एक दो री इन्वेस्टमेंट और उससे कोई ये नंबर चेंज नहीं होने वाला है। जितनी जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़े पोर्ट्स, रोड्स, नए पोर्ट्स में, नए रोड्स में, नए एयरपोर्ट्स वगैरह में जा रही हैं, और मेरे ख्याल से वो एक अलग ये जो आपने बोला वो बहुत ही उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। हेलो। हाँ, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपका जो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड, उस पे आपका क्या है? देखिए, डिजिटल फंड जो है वो ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट है, तो उसके थोड़े से टफ टाइम गुजर रहा है। उससे अच्छा मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल के पीक से काफी डिक्लाइन हो चुका है, और उसमें कोई ग्लोबल इश्यूज नहीं है, और मुझे लगता है इंडिया में भी थिंग्स आर नॉट सो बैड कि वो वैल्यूएशन इतना गिर जाए। तो पिछले साल थोड़ा ओवर वैल्यूएशन था,
और इस साल थोड़ा जो ओवर वैल्यूएशन है वो निकल गया है, तो मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कैन बी गुड ऑप्शन। डिजिटल फंड जो है उसमें अभी जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी कुछ कंपनीज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उनकी बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, उनकी बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा यूएस में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो सब मिला जुला के ये जो फंड है डिजिटल फंड, वो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव रिटर्न देगा, बट उसमें कुछ बहुत ज्यादा अभी एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही है, और वैल्यूएशंस थोड़े चीप हो गए हैं, इसलिए आपको यहाँ से डिक्लाइन नहीं होगा, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी उसमें कम ही रखनी चाहिए। So Samir here. You stated that अगले 6 महीने के लिए 8 to 10% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, and for year or two we can anything between 12 to 15%. But can we see a rally kind of thing which we saw in 23, 24, like you know, wherein जो या 22, 23 के बीच में वैसा वाला रैली do we expect in next 5 years or something? देखिए रैली बीच में जो यूफोरिया होता है वो तो कभी भी हो सकता है, 5 साल का बहुत लंबा पीरियड आपने बोला, दैट कैन हैपन बिकॉज सी व्हेन विल द रैली हैपन नाउ, लेट अस एनालाइज द रैली कैन हैपन लाइक दैट व्हेन द मार्केट गेट्स कन्विंस्ड दैट the profit growth will be not 10% but 15-20%. See, this is what happened in between 22 to 24. The profit growth of the corporate sector was 17% CAGR. Okay. So that kind of that growth came down to 3% in fiscal 25. 3%. इसलिए market भी बीच में during FY25 it created a peak, but ended it the year at 2-3% return only. So it is completely following the earnings. So this time the difference is that, and therefore this year I am saying that there will be slow recovery. I think I am not expecting consumption ki ek saath ekdam suddenly there will be too much recovery. So slow recovery also will make us at least stable at these levels and maybe give us 8-10% return on a full year basis. Matlab April 25 to March 26. Okay. That is possible. So from here I don't know how much return that does it make, but that is how you should think about it. Now next year, when banks will grow faster, because banks this year will be the worst year in terms of margin pressure and all that. Next year, commodity prices, cement, बहुत सारी consumption वाले जो companies हैं, they will recover their profit growth. So next year, if the visibility comes of 15-17% profit growth, then I think FIIs will also come back. Domestic money is anyway there. Then I can visualize a scenario कि आज जो 21 PE है वो 22 हो जाए या 23 हो जाए, तो 15% आपको profit growth से can come and 5% because of the valuation going up. So maybe 20% return can happen in fiscal 27. But let us see. I mean, that is a more optimistic scenario right now. But the critical part is to watch growth. And the first sign of growth you have to see is what happens in this festival season, because that will give market a lot of confidence. Even though some part of the festival season is already getting lost. And also one data point which we have to track is the credit growth, because the bank ka overall credit growth jo system mein hota hai, RBI declares that data, has come down to 9 to 10%. If that starts going up, that means the economy is starting to grow faster, and that is what FIIs watch. And then when they come back, the next peak, according to me, or the next such rally which you're talking about, will have to be created by FIIs and not domestics. And that is why when that happens, your large caps will do better. See, no rally is complete, or no bull market is complete without large caps participating. And that has not happened. And that has not happened. So once that happens, it can happen. I mean, in the next 5 years, someday it will happen. Especially if FI money, I told you, US foreigners own $20 trillion of US equities. So even if they shift 5% of that to China and India, that is $1 trillion. So uska, 20% also comes to India is $200 billion. So those are big numbers. Right now, nobody is shifting that aggressively because they are saying, okay, India is not very cheap, growth is little slow. Let us see growth coming back or not. So it all depends on growth. That kind of rally which you're talking about will depend on growth. I'm optimistic, but we still have to see whether that happens or not. Okay. Thank you, sir.
current market concentration level in the US are the highest observed. Will it affect the global and Indian market? No. I don't think there is any risk of that, because see, these are great companies, FANG stocks or Nvidia and so on. These are great companies, technology leaders, etc. So even if there is some risk or collapse in that, maximum the sentiment on the IT sector in India will be reduced. In fact, I would say it's the other way around, that if the US market tops, because last 10 years US market has been the best performing market. If the US market performance comes down because of these 5-6 stocks, then more money will come out of US into China and India and gold. So it will, in fact, instead of being a risk, it can be a positive, because it will accelerate the amount of shift which people will make from US to emerging markets. Sir, Nikhil from Nagpur branch, sir. One more help from your side. अपना एक NFO आ रहा है, तो थोड़ा guidance point आप दे पाएंगे तो that will be good for us. This is the next 50. Yes, sir. So Nifty Next 50 obviously is a good sweet spot between large caps and mid caps. So the mid caps which do well go into the Nifty Next 50, because they are the mid caps which become large caps. Initially, they become large caps and then they go into Nifty. So technically, if you see, they will be the faster growing companies. And that is why I think, although the valuation will be higher, but I think from a growth point of view, the growth there will be higher than the Nifty 50 companies. And that is the opportunity in Nifty Next 50. Any another question from teams? हेलो 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 सर, आपने जो अभी जो NFO के बारे में बताया, तो मतलब इस टाइप के और फंड्स है क्या अवेलेबल? और ये जो आपका जो फंड है, तो इससे एक्सपेक्टेशन कितनी कर सकते हैं रिटर्न की, इन केस मतलब 1 year to 3 year? आप दोनों केसेस में बता दीजिए, और फंड मैनेजर की फैक्ट शीट तो हम लोग चेक कर लेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थैंक यू। नहीं, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर निफ्टी 50 8% ऊपर जाएगी तो ये 10-12% ऊपर जा सकती है, तो इट विल बी लिटिल बेटर रिटर्न देन निफ्टी 50। नंबर 1, ऐसे काफ़ी हमारे पास पैसिव फंड्स हैं। आप अगर हमारे ब्रांच में कांटेक्ट करें निखिल से, तो हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसिव फंड्स हैं, टेक्स फंड्स हैं, काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स हैं, और भी हमारा काफ़ी प्लान है इसमें लॉन्च करने का। तो आपको अलग अलग सेक्टर के लिए भी फंड्स मिल जाएंगे इसमें, इंडेक्स फंड्स। On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt thanks to Mr. Rahul Singh sir for the insightful session on the topic market outlook. Your expertise and clear explanation of complex trends have given a deeper understanding of where the market is heading and how we can navigate it effectively. Your practical advice and forward-looking perspective are invaluable, especially in these dynamic times. Thank you once again, sir, for sharing your knowledge and guiding us. Thank you. Thank you, everyone. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, sir.